Okay, so this session we are starting with gas laws. Before we do the interaction part, we will be doing gas laws. In the previous lectures, we have done pressure, volume, temperature और उनका interrelation. इंटररिलेशन नहीं, सॉरी, उनका यूनिट कन्वर्जन्स. अभी हम लोगों को गैस लॉस में क्या पढ़ना है? वी नो कि प्रेशर इज रिलेटेड, प्रेशर ऑफ द गैस इज रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ गैस, इज रिलेटेड टू द temperature of the gas, is related to the moles of the gas. But how is it related? ठीक है, वो हमें देखना है. डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, दैट वी हैव टू सी. So the first gas law that we are going to learn is Boyle's law. Okay, abhi there are four parameters gases ka that we are going to learn. Four parameters we are going to learn, that is pressure, volume, temperature and moles. तो whenever we are comparing two of it, बाकी के दोनों कांस्टेंट होने चाहिए. जैसे अगर हम लोग प्रेशर और वॉल्यूम को कंपेयर कर रहे हैं बॉयल्स लॉ में, we are going to find out the relation between pressure and volume. So the temperature of the gas and the moles of the gas has to be kept constant, क्योंकि you can't keep on changing it. दो चीजों को कंपेयर करें, बाकी दोनों को कांस्टेंट रखना है. तो इट्स प्रीटी सिंपल. प्रेशर और वॉल्यूम मैं एक डायग्राम से ही एक्सप्लेन कर सकता हूँ, प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन. इफ यू विल सी दिस जिफ, सो ऊपर से प्रेशर बढ़ रहा है, तो व्हेन द प्रेशर इज इंक्रीजिंग इट इज मूविंग डाउन, तो द वॉल्यूम इज डिक्रीजिंग. एज यू कैन सी इन द फिगर, द टेम्परेचर इज कांस्टेंट. So the pressure is increasing and the volume is decreasing. So the pressure and volume are inversely proportional. This is Boyle's law. Boyle's law states that at constant temperature, ठीक है, temperature should be constant, the volume of the given mass of gas, mass is constant मतलब moles is constant, is inversely proportional to the pressure. So pressure is inversely proportional to volume, we will put a constant. ठीक है, pressure is inversely proportional to volume, we'll just put a constant over here, equal to, I'll put a constant K1 and here it will be V. So we will be having pressure into volume will be equal to that constant K1. Now if I'll change my pressure, that if my pressure is P1, then my volume is V1. If I change my pressure to P2, my volume becomes V2. But the constant remains same. P1 into V1 will remain the same constant K1 and P2 into V2 will remain the same constant K1. So in that case, I can say P1 into V1 will be equal to P1 in P2 into V2 will be equal to P3 into V3 if third case is there. Or indirectly, I can say, as it is inversely proportional to, so pressure 1 by pressure 2, that is pressure at case 1 and pressure at case 2 will be equal to V2 by V1, as it is inversely proportional. So if 1 is up, so volume V1 will be down. If pressure P2 is down, volume V2 will be up. Okay, if the GIF was not moving, you can see the GIF right now. As you can see, it's moving now. When you increase the pressure, the volume decreases. And if anything you have not seen, you can see it now. So this is Boyle's law. Pressure is inversely proportional to volume. Always remember कि whenever we are comparing two things, बाकी की चीजें constant होनी चाहिए. वरना अगर मैं तुमको बोलूं कि तुम्हारा प्रेशर बढ़ रहा है, तुम्हारा वॉल्यूम भी बढ़ रहा है और तुम्हारा टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, तो हमें कैसे समझेगा कि वॉल्यूम क्यों बढ़ रहा है, प्रेशर के वजह से बढ़ रहा है कि टेम्परेचर के वजह से बढ़ रहा है. इसीलिए whenever you are comparing two things, rest of the things should be constant. इसीलिए here we kept temperature constant, we were not changing the temperature. We kept the mass of the gas constant. When we keep the mass constant, obviously moles becomes constant. So moles was also constant. So pressure and volume was inversely proportional. This is what we have seen. We'll move to the second gas law, which is Charles law. Okay. Okay, so we will move with the second gas law, which is a Charles law. So in Charles law, what are we going to do is there will be a relation between volume and temperature now. तो अगर वॉल्यूम और टेम्परेचर का रिलेशन है, अगेन आई विल राइट डाउन PV TNN. तो अगर मैं वॉल्यूम और टेम्परेचर को कंपेयर कर रहा हूं, तो प्रेशर हैज टू बी कांस्टेंट, मोल्स हैज टू बी कांस्टेंट.
So pressure is going to remain constant, moles is going to remain constant. Now this you can see in the GIF also. Pressure is remaining constant. I am increasing the temperature. Barabar? We all have observed this. When we heat the gas, it will move away. So when you're increasing the temperature, the volume is also increasing. The gases are moving away from each other. So temperature is directly proportional to volume. When you increase the temperature, volume also increases. This is Charles' law. Okay? When the pressure of the sample of the gas is held constant, the pressure is remaining constant, then the temperature has to be measured in Kelvin, okay? And the volume are directly proportional. Okay, so again the same thing कि जैसे pressure and temperature are directly volume and temperature are directly proportional, so we can just put a constant equal to a constant K2. Earlier I used K1, so here I will be using K2. So if your volume is V1, your temperature is T1, then your constant is K2. When your volume increases to V2, your temperature is T2. So still your constant is K2. So here you can say V1 by T1 equal to V2 by T2. और अगर मैं alternando कर दूं तो you can say V1 by V2 is equal to T1 by T2. जस्ट अंडरस्टैंड अर्लियर जब बॉयल्स लॉ में कर रहे थे, क्योंकि बॉयल्स लॉ में वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल था, तो P1 by P2 was equal to V2 by V1. वाइल यहाँ पे क्योंकि वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो V1 by V2 is equal to T1 by T2. You don't have to worry about the constant K1 और K2, क्योंकि वो हर गैस के लिए चेंज होगा, तो उसको कोई वैल्यू याद भी नहीं रखना है, हमको ये रिलेशन याद रखना है. क्वेश्चंस ऐसे आएंगे. Okay, so we will do the third also. We'll complete the third one also, that is the Gay-Lussac law, and then we will do some साथ में. Okay, so now Gay-Lussac law is much more simpler. क्योंकि now you have to find out the relation between pressure and temperature. So if I find out the relation between pressure and temperature, so the volume should remain constant and even the moles should remain constant. So I can just give you an example of pressure cooker. मैं प्रेशर कुकर का अगर बात लूं तो प्रेशर कुकर का वॉल्यूम कांस्टेंट है, उसके अंदर का गैस का वॉल्यूम भी कांस्टेंट हो रहा है बिकॉज वी आर नॉट अलाउइंग द गैस टू मूव आउट. तो अगर मैं उसका टेम्परेचर बढ़ाऊं, अगर मैं प्रेशर कुकर का टेम्परेचर बढ़ाऊं, आई एम इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, तो अंदर प्रेशर भी बढ़ेगा. तो चार्ल्स लॉ की तरह गे-लुसाक में भी टेम्परेचर और प्रेशर का डायरेक्ट रिलेशन है. तो प्रेशर एंड वॉल्यूम वर इनवर्सली प्रोपोर्शनल, लेकिन वॉल्यूम एंड टेम्परेचर आर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल and pressure and temperature are also directly proportional. Just let us see. Gay-Lussac law states that at constant volume, the absolute temperature of the gas is directly proportional. यहाँ पे कुछ mistake है typing में. It is actually directly proportional to the pressure. Okay, यहाँ पे just I have given an image. GIF नहीं है वो. The image just says कि when you are heating, the pressure will increase. क्यों increase हो रहा है pressure? क्योंकि when you are increasing the temperature, जो gases के molecule है, they will collide more. बराबर? तो pressure बढ़ जाएगा. Temperature के बढ़ाने से collision बढ़ गया, तो pressure बढ़ गया. तो by this GIF you can see कि पहले pressure P1 था. As now we know कि pressure is directly proportional to temperature. So I can just write P is equal to K3, the third constant, and T. So when my pressure is P1, so my temperature is T1, my constant is K3. When my pressure is P2, my temperature is T2, the constant is K3. So I can just say P1 by T1 is equal to P2 by T2, or I can do alternando. T1 by P2 is equal to T1 by T2. तो सेम क्योंकि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो 1 ऊपर आया तो 1 इधर भी ऊपर आ गया.
You can very well see over here when the pressure is low here the pressure has increased क्योंकि you have started heating. So this one is pretty simple. प्रेशर कुकर का एग्जांपल बेस्ट एग्जांपल है टू एक्सप्लेन Gay-Lussac law. So as we have done all the three relations, let us find out a few questions. Let us do few sums. So we have done pressure and volume are inversely proportional. Volume and temperature are directly proportional, and pressure and temperature are directly proportional. So the question says a container holds 500 ml, that is the volume given, of CO2 at 20 degrees Celsius and 740 torr. So this is the pressure given. What will be the volume? The other volume has been asked if the pressure is increased to 800 torr. So there are two pressures and there are two volumes given. Okay, so how do you solve this? This is pretty simple question. So यहाँ पे P1 pressure 1 is given as 740 torr. P2 pressure 2 is given as 800 torr. Volume V1 is given as 500 ml. V2 is not given. Temperature is constant. In both the case, it is 20 degrees Celsius. But anyway, in the sums, temperature always has to be kept in Kelvin. Okay, because temperature will differ. डिग्री सेल्सियस और केल्विन में. जैसे अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, तो अगर मैं V1 और V2 की बात करूं, तो अगर मैं 1 लीटर लू वॉल्यूम और 2 लीटर लू V2, तो रेशियो 1:2 है. इसको अगर मैं ml में भी कन्वर्ट करूं, तो इट विल बी 1000 ml अपॉन 2000 ml. स्टिल द रेशियो विल बी 1:2 ओनली. तो वॉल्यूम में यूनिट्स इतना फर्क नहीं पड़ता, लेकिन टेम्परेचर में पड़ता है. टेम्परेचर अगर मैं लू T1 एंड T2, तो टेम्परेचर अगर 1 डिग्री सेल्सियस है और नीचे 2 डिग्री सेल्सियस है, ठीक है, इसको मैं केल्विन में कन्वर्ट करूं, तो दिस विल बी 274 अपॉन 275 केल्विन. तो ऑब्वियसली 274 बाय 275 इज नॉट 1/2. तो केल्विन में, क्योंकि दिस इज द ओनली कन्वर्जन टेम्परेचर जहां पे एडिशन होता है, यू हैव टू टेक अ स्टैंड एंड वी से कि ऑलवेज इट हैज टू बी इन केल्विन. तो टेम्परेचर ऑलवेज हैज टू बी इन केल्विन व्हाइल बाकी का यूनिट चलता है, इतना कोई इश्यू नहीं है. सो हमने टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट किया, बट हाउएवर वो सेम है, तो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा. यहाँ पे प्रेशर और वॉल्यूम का रिलेशन है, तो वी नो इट्स इनवर्सली प्रोपोर्शनल. तो वी नो P1 by P2 is equal to V2 by V1. So finally we need V2, which will be P1 into V1 by P2. We substitute the value. P1 is 740, V1 is 500, and P2 is 800. We substitute the value, we get the answer 462.5 ml. So that is the volume. तो ये Boyle's law का सम है. एक क्वेश्चन आई विल गिव यू एज होमवर्क. यू ट्राई दिस क्वेश्चन. इसके मैं डेटा यहाँ पे लिख के दिया है. You try to solve it on your own. Moving to the next type of questions. In this question, a gas occupies a volume of 400 ml, that is centimeter cube, at 27 degrees Celsius and 780 mm of Hg. How many liters of volume will the gas occupy at 78 degrees Celsius? So we have increased the temperature. 27 डिग्री से 78 डिग्री हो गया. हमें वॉल्यूम पूछा है. पहले वॉल्यूम 400 था, अब वॉल्यूम पूछा है. प्रेशर दिया है बट कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रहा है. 780. सो मूविंग टू द क्वेश्चन. वॉल्यूम V1 दिया है 400 ml. V2 पूछा है. टेम्परेचर 27 has to be converted into Kelvin, तो ऐड किया 273, 300 Kelvin, 78 degrees, 351 Kelvin. Okay, now in this particular question हमारा रिलेशन है वॉल्यूम और टेम्परेचर का. तो we know volume is directly proportional to temperature. तो V1 by V2 is equal to T1 by T2. तो V1 is given as 400, V2 ढूंढना है हमें, T1 is given as 300 और T2 is 351.
So therefore our V2 is going to be 400 into 351 upon 300. We solve this, we get the final answer. और जो final volume रहेगा वो भी ml में आएगा, क्योंकि V1 भी ml में था तो V2 भी ml में आएगा. Solving this particular question, V2 by V1, we get the final answer as 468 centimeter cube, which is same as ml. इसको अगर लीटर में कन्वर्ट करना है तो 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये मैंने लीटर में लिखा. Another question I'll give you as homework. Try to do this question. इसका solution मैं नीचे लिख के दे रहा हूं. याद रखना यहाँ पे टेम्परेचर -273 है, तो -73 है, तो -73 प्लस 273 is going to be 200 Kelvin. तो केल्विन में प्रॉपरली कन्वर्ट करना. So here we go. So this is the final answer. Kelvin में मेरे को 140 Kelvin आया, so I've converted it into degree Celsius by subtracting 273. थर्ड टाइप का प्रॉब्लम ये लुज़ैक के ऊपर था. अ गैस हैज अ प्रेशर ऑफ 780 mm of Hg at 27 degrees Celsius. What will be the pressure of the gas at 127 degrees Celsius? So it's a pretty direct question. 27 डिग्री से 127 डिग्री हुआ है, मतलब टेम्परेचर मेरा इंक्रीज हो गया है, तो मेरा प्रेशर भी बढ़ेगा, क्योंकि गेल-लुज़ैक लॉ यही बोलता है कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर. तो P1 by P2 is going to be T1 by T2. But yes, temperature has to be converted into Kelvin. These two has to be converted into Kelvin. So here you can see pressure is 780. P2 निकालना है. T1 is 27 degrees Celsius. 273 add किया 300 Kelvin. 127 degrees Celsius. 273 add किया 400 Kelvin. तो P1 by P2 is T1 by T2. तो P2 का वैल्यू हमें आराम से सॉल्व करके आ जाएगा as 1040 mm of Hg. Again, the unit will be same as the pressure वाला unit. The next question I'll give you as homework. Again, the temperature I have put as -73 degrees Celsius. So please make sure कि उसको बराबर convert करो Kelvin में. And the final answer, I'll just show it to you. You try to do the sum by your own.